हाँ, यस। सो हमें ये डिस्कस करना है, ओके, कि ये फैक्ट है, इस there is an issue about it with respect to the environment, एंड हम क्या कर सकते हैं जिसके हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ताकि इसका जो इन्वायरमेंट पे इंटेंसिटी है, इम्पैक्ट है, ओके, या इम्पैक्ट है, वो लो हो जाए. So first thing is could be about devices and power. You will see that somehow or the other, these all things are related to each other because they all are talking about electronic devices. Now, अगर हम electronic devices की बात करें students, okay, so can we list down what could be the electronic devices which we are using on and off? Can someone tell me? Let us list down which are the electronic devices. Laptops, Okay, just a second. laptop, mobiles, एक सेकंड ना CDs. स्टूडेंट. Just a second. So let's just name down. Okay, एक हो गया laptops, correct. Then mobiles, okay. Then TV, correct, absolutely correct. Then AC, absolutely correct. Then personal digital assistants, very nice, correct. Then now, lights, okay. Uh, Now can you Your refrigerators. okay, can some of you think of some electronic devices with respect to computing? Except, so we have just written, noted down laptops. Definitely, you are absolutely correct with the other ones. Yes, sorry. Tablets, tablet Okay, PCs. tablets, PCs, PCs. So I will write it as desktops, okay, which is another word which we use. Okay, okay. So servers, definitely they will come into this category. But can anyone tell me how server will be different than a laptop or a PC? How it will be different? Okay, think about it. There will be clients, there will be printer, there will be scanner, okay, there would be network devices. Can anyone name some network devices? Wi-Fi router. Yes, Wi-Fi router, correct, broadband, Mobile towers. correct, correct, broadband. correct. Okay, yes. So now I think, yeah, you are now are very clear. Now whatever we have listed down over here, okay, some other things which we haven't listed down are, I'll tell you, CDs, DVDs, which we are not using right now, okay, DVD player. yes, pen drives, okay. So are you able to understand that we are almost surrounded by so many electronic equipments itself? Okay, you have almost talked about two different categories. Now I will say one category where you have, we will say it is for personal use, and one another category is mostly, we will say for the computing purpose. So devices and power, okay, which means there are so much of devices we are using these days, and there is so much of power consumption which is happening. So this is fact, okay, we have listed down so many devices which are there, and definitely they all are consuming power. So somewhere or the other this is a fact, but definitely it is an issue also. There is a problem also which all of them are creating with respect to the environment, in the sense there is a power consumption which is increasing day by day. So now what we can do, okay, so that we will be discussing today. Let's not discuss about, but that will be discussing, okay. Secondly, disposal of old electronic devices. Now why I have listed down CDs and DVDs, okay. So the most important thing which happened in electronic devices is upgradation. What was there 10 years back is not there today. People have changed. Whatever you have listed down, students, over here, people have changed. Whatever laptop was there 10 years back, today rarely, hardly, there could be 10% which will be used again. CDs no use, DVDs no use, pen drives 10 years, no, not at all. Lifetime mobiles, no. TVs, okay, we say somewhere or the other, people, but still also, okay, people have replaced with smart TVs and so on, okay. Tablets, PCs, okay, printer, scanner, server, client. Okay, so this is again one of the biggest fact, that upgradation of the electronic devices happen time to time, and this is a big issue with respect to the environment,
that what happens to the old electronic devices, the way they are disposed, or the way they are just thrown into the ground, or the way they release some harmful chemicals, what exactly is happening over there. Okay, energy consumption, again the same thing. Now if with respect to energy consumption, I would like to quote you one example of something which is known as data center. Have you all students heard this word, something like data centers? Data center. Yes. Yes, Yes. ma'am. Okay, so data center probably will be a place where we can say huge amount of data is getting stored, processed, and etc. etc. Okay, so just taking an example, let's say YouTube is having a data center. So somewhere or the other, some years back, 1 or 2 years back, मैंने पढ़ा था कि यूट्यूब जो है जो एक दिन में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, ओके ना एनर्जी कंजम्पशन वो किस लिए करता होगा, ओके उसके पास सर्वर होंगे, उसके पास क्लाइंट होंगे, उसके पास डेटा सर्वर्स होंगे, उसके पास नेटवर्क होगा। तो डेटा सेंटर की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इवन डेटा सेंटर को तुम्हें कूल करना पड़ता है, ओके, बिकॉज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर वर्किंग 24/7 365 days, रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, जिसको तुम्हें कूल करने के लिए वापस से उतना ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, दैट इज अगेन अ बिग पैरामीटर स्टूडेंट्स, कूलिंग, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट पॉइंट ये है कि एनर्जी कंजम्पशन, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब जो एक दिन में यूज़ करता है उसका पावर कंजम्पशन इज इक्विवेलेंट टू अ पावर कंजम्पशन ऑफ अ स्मॉल कंट्री फॉर 1 day। तो अगर मैं एनालॉजी करूँ तो इफ वी टॉक अबाउट अवर स्टेट, लेट्स से महाराष्ट्र, तो उसका एक दिन का जितना पावर कंजम्पशन होगा तो होल स्टेट will be equivalent to the power consumption which is done by YouTube in a particular day. I hope you can understand what I'm trying to tell. Okay, तो ये फैक्ट है, ये कंसर्न हो गया, और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, ताकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा लो हो सके। हार्मफुल केमिकल्स एंड मेटल्स, मैंने जैसे अभी बताया, ओके, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टूडेंट बनता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो ऐसे नहीं बन जाता है। देयर आर सो मेनी केमिकल्स एंड मेटल्स विच आर यूज्ड इनटू दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, नाउ जब हम उसको बनाते भी है तभी भी हमें इसके साथ डील करना होता है, लेकिन वर्स्ट क्या हो जाता है जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, जब हम ये डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे, जब ये डिकम्पोज हो रहा है, जब ये डिस्पोज हो रहा है, तो जो हार्मफुल केमिकल्स और मेटल्स रिलीज होते हैं, ओके, दैट आर वेरी 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 हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड इवन दे आर वेरी हार्मफुल टू द पीपल। जस्ट अगर हम एक एग्जाम्पल दे, ओके, तो जो हमारे सेल्स होते हैं, ओके, बैटरी के सेल्स, जो के जब वो बहुत टाइम तक यूज़ नहीं होता है, पड़े तो इट विल स्टार्ट लीकिंग, ओके, एंड इट विल टच दैट केमिकल, ओके, कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी it can harm your skin, or it is actually not good at all. Okay, you will feel and you will sense it that this is a harmful chemical and metal. So there is issues there. So basically summarize क्या है environmental issues related to electrical devices। तो major issue क्या हो रहा है इधर कि जितने भी electronic device है वो one way or the other मतलब चाहे वो पावर कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, चाहे उसमें हार्मफुल केमिकल्स या मेटल्स यूज हो रहे हैं, चाहे उसको डिस्पोजल हम कैसा कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, so these are the facts, these are the issues, and now we have to understand and study how we are going to deal with them. Okay, हम इसके साथ डील कैसे करेंगे या हम क्या करेंगे जिससे हम इसका इंटेंसिटी जो है उसको हम लो कर सके। ओके, so this was about, we can say, the introduction part. Okay, so now we'll just discuss a small thing, then we'll stop. So green computing का first motive क्या है? We should start making use of 3R. Now what is 3R? So 3R says reduce, reuse Reduce, reuse. and recycle. Absolutely correct. Okay, so 3R हमें सबसे पहले, मतलब this is just one of the motive, ये this is just a very small simple thing which green computing wants to tell us कि you all start using 3R. What is 3R? Reduce. First, try to limit the number of purchases. If you have already one mobile, don't purchase the another mobile without any other reason. Okay, this is about without any other reason. If there is a need, if something is not working, okay, if there is a big technological updation, that is totally a different thing, but unnecessarily. Okay, it is similarly, let's say if you already have a four-wheeler, why to purchase another four-wheeler? See, this concept will actually work in almost all area which are impacting environment. So automobiles also is somewhere or the other impacting the environment. Okay, so there is a different stream wherein you connect automobiles and environment together. Okay, so then people have come up with electrical cars or hydrogen cars and so on and so on. Okay, so I hope this is a similar thing. Okay, here our focus will be on computers, here our focus will be on hardware, here our focus will be on electronic devices. So the first thing is that reduce, limit the number of purchases. Second, reuse. Okay,
we should try to reuse the electronic devices as much as possible before replacing them. So the simple thing is, okay, let's say you have a machine which is, let's say, 4 5 years back, but let's say a new operating system have came, uh, the memory requirements have increased. So first of all, see whether it is possible. Is it possible, can I increase my RAM? Is it possible, can I have an external storage device? Is it possible, can I upgrade my operating system so that I would be able to work on with this current machine again for some years? Okay, so definitely we should first try to do that. Secondly, if at all, let's say you have decided to change it, then whatever your current existing device is there, it has to be given somewhere where it should be used. ओके मतलब कहीं पे ऐसे देना चाहिए कि जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे शायद कोई नया डिवाइस परचेज होने वाला था लेकिन उसकी जगह चलो आपने ये दे दिया कि चलो आप ये यूज़ करो, ऐसा। पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पे ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहेगा तो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, वो फ्यूचर में एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। लेकिन अगर कहीं पे दे रहे हो आप, ओके, या थर्ड, या उसको रिसाइकलिंग में भी दे रहे हो, तो समवेयर और दी अदर कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है, जो है उसमें से ही कुछ यूज़ हो रहा है। सो ये सबसे क्या होगा, ओके, सो दैट इज रीयूज एंड रिसाइकल। आई थिंक वी ऑल नो कि हमें रिसाइकलिंग का मतलब क्या है। अगर कुछ चीज़ जो है वो यूज़ ही नहीं हो रही है तो हम उसको हम रिसाइकल में ले सकते हैं। और ग्रीन कंप्यूटिंग में हम एक और चीज़ सीखेंगे, रिफर्बिश। ओके, रिफर्बिश के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन रिसाइकलिंग हम सबको पता है कि जो अगर हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे तो हम दे देते हैं, ताकि वो यूज़ होके कुछ नई चीज़ जो बनने वाली है उसमें ये चीज़ भी काम आ जाए। ओके, सो दिस इज़ द मेजर फोकस of green computing. It says we should reduce, reuse and recycle as much as possible. जितना एक्सटेंट तक हो सके हम रिड्यूस करेंगे, जितना एक्सटेंट तक, क्योंकि अगर हम ये एक मोटिव भी लेते हैं, देन द सेम थिंग, अगर आज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट 100% है, देन मे बी आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली वो थोड़ा तो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द मेजर मोटिव ऑफ what we say green computing: reduce, reuse and recycle. ओके, सो हमने आज क्या देखा? ओके, हमने देखा कि कौन कौन से इश्यूज है। ओके, लेकिन वो सिर्फ इश्यूज नहीं है, वो फैक्ट भी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये हो ही रहा है, ये होने ही वाला है। तो किस तरीके से हम उसका इंटेंसिटी जो है, किस तरीके से जो इसका इम्पैक्ट है, वो हम एनवायरनमेंट पे कम कर सकते हैं। ओके, okay, so yes, that was their students. Okay, and in the next lecture, okay, we'll look about what is recycling. Okay, we'll understand the process of recycling. So we can say we have just seen the introduction part today. In next lecture we'll be start looking on what is e-waste recycling, and we'll go ahead in understanding what is green computing. Okay, so Yes, ma'am. yeah, great.